Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are doing numerical number 2.9 to 2.12, chapter number 2. Let's start. 2.9. Why does range R of a projectile remains the same? Range R same रहती है when the angle of projection is changed from theta to theta prime 90 minus theta, यानी थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए रेंज सेम रहेगी. फॉर एंगल थीटा एंड थीटा प्राइम दैट इज 90 माइनस थीटा. आर जो है दैट इज इक्वल टू आर प्राइम, और प्रूव हमने ये करना है आर ओवर आर प्राइम दैट इज इक्वल टू 1. ज़ाहिर है जब ये रेंजेस बराबर होंगी तो रेशो 1 होगी. तो फार्मूला आप लोग जानते हैं, आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g, and for theta prime 90 minus theta के लिए r prime that is equal to vi square over 2g sin 290 minus theta, and this become vi square over 2g sin 180 minus 2 theta. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की मदद से sin 2 theta is equal to sin 180 minus 2 theta, यानी sin थीटा और sin 180 माइनस थीटा आपस में बराबर होते हैं. Therefore r is equal to, यहाँ पे लिख लीजिए r डैश that is equal to r, और r over r डैश that is equal to 1. ये मैथमेटिकल रिलेशन प्रूफ करने की हमें ज़रूरत नहीं है. मैथमेटिक्स वाले लोग जानते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है. 2.10. A trolley of mass 1 किलोग्राम, एक ट्रॉली जिसका मैस 1 किलोग्राम M1 1 kilogram. A trolley of mass 1 kilogram moving with the velocity of 1.0 meter per second. 1.0 meter per second collides with a similar trolley. This means M2 भी 1 किलोग्राम ही होगा. At rest V2 0. One after collision the trolley comes to रेस्ट, और आफ्टर कोलिजन जो
ट्रॉली 1 है यानी V1 प्राइम जो है दैट बिकम्स 0 एंड आफ्टर कोलिजन जो सेकंड ट्रॉली है आफ्टर कोलिजन the first trolley comes to rest whereas the second start moving with the velocity of 1 meter per second. इसकी velocity 1 meter per second हो जाती है. In the same direction, show that it is an example of elastic collision. आपने बताना है कि ये elastic collision है. ये इलास्टिक. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिटरमाइन करेंगे. तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन is equal to 1/2 m1v1 square plus 1/2 m2v2 square. 1/2 m1 is 1, v1 is 1. 1/2 m2 is 1, v2 is 0. 1/2 into 1 का square, it comes out to be 0.5 joule. ये इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम है. नाउ आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन KEF 1/2 m1 v1 prime square plus 1/2 m2 v2 prime square 1/2 m1 1 and v1 prime. v1 prime is now 0 plus 1/2 m2 and v2 prime is now 1. ये तो 0 आ गया, 1/2 और ये 1. दिस इज 0.5 joule. You see, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपस में बराबर हैं. Therefore, collision is elastic. KE final is equal to KE initial collision is elastic. इसका सेकेंड पार्ट आफ्टर द कोलिजन दे स्टिक टुगेदर. कोलिजन के बाद सेकेंड पार्ट है इसका. कोलिजन के बाद ये एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाते हैं और इनका मैस हो जाता है जी m1 प्लस m2. 1 + 1 is equal to 2 किलोग्राम. कोलिजन के बाद इनका मैस 2 किलोग्राम हो जाता है जी. आफ्टर द कोलिजन दे स्टिक टुगेदर एंड मूव अवे विद द स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड. और इसकी जो वेलोसिटी है 0.5 मीटर पर सेकेंड हो जाती है जी. शो दैट इट इज एन एग्जांपल ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन. अब ये कैसी कोलिजन है, ये इन इलास्टिक कोलिजन है. अब हमने इसको प्रूव करना है. अगेन वी यूज द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है या नहीं है. नाउ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो तो सेम होगी 1/2
m1 v1 square plus 1 over 2 m2 v2 square। ये v1 1 है, 1 over 2 into 1 का स्क्वायर, और ये v2 is 0, so this is 0.5 joule. And this is the initial kinetic energy. After impact, the kinetic energy KEF 1 over 2 mv square, 1 over 2, now m is 2 and v is 0.5. Cancels, 0.5 square, 0.25 joule। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इतनी है, इनिशियल इतनी है, तो ये लेस है। के फाइनल इज लेस देन के इनिशियल। लॉस भी निकाल ले, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 0.5 माइनस 0.25, तो 0.25 जूल का लॉस है। देयरफॉर कोलिजन इज इनइलास्टिक, देयरफॉर कोलिजन इज इनइलास्टिक। इसके साथ ही ये 2.10 खत्म हुआ जी। नाउ 2.11 A railway wagon of mass 4 into 10 raised to power 4 kilogram moving with the velocity of 3 meter per second collides with another wagon of mass 2 into 10 raised to power 4 kilogram which is at rest, and the m1 4 into 10 raised to power 4 kg and v1 3 meter per second, m2 second wagon collides with another wagon of mass 2 into 10 raised to power 4 kg which is at rest, v2 is 0, they stick together, तो after collision इनका मैस कंबाइन हो जाता है जी। m1 प्लस m2 4 10 raised to power 4 2 10 raised to power 4 kg, that is 6 10 raised to power 4 kg. This is the combined mass. They stick together and move together. Find their common velocity. कॉमन वेलोसिटी इनकी डिटरमिन करनी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमने इनकी कॉमन वेलोसिटी डिटरमिन करनी है जी। फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। This is the law of conservation of momentum. Law of conservation of
तो हमने इनकी कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो इसके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे। लॉ ऑफ conservation of momentum. Final momentum is equal to initial momentum. mv is equal to m1 v1 plus m2 v2 m6 10 raised to power 4 v हमने फाइंड करना है, m1 4 10 raised to power 4 and v1 3 plus m2 2 10 raised to power 4 and v2 is 0. Now 6 into 10 raised to power 4v is equal to 12 into 10 raised to power 4. 10 raised to power 4 cancel, 6v 12v 12 by 6 2 meter per second. Their common velocity that will be 2 meter per second. 2.12. A car with mass 575 kilogram. Mass of car let it be m1 575 kilogram is moving at 15 meter per second. v1 ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 is equal to 15 meter per second smashes into the rear end of the car, दूसरी कार के पीछे से टकरा जाती है with mass 1575 m2 mass of second car. m2 that is 1575 kilogram moving at 5 meter per second, इसकी velocity 5 meter per second in the same direction a. What is the final velocity of the wrecked car locked together? दोनों की फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, दोनों जब इकट्ठे चलती हैं टकराने के बाद. एंड बी, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द कोलिजन. लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिटरमिन करना है. तो फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे. Law of conservation of momentum. m1 v1 plus m2 v2 is equal to mv, जबकि ये जो m है that is m1 plus m2, यानी m1 575 v1 15 plus m2 1575
V2 5 is equal to M, M1 plus M2, M1 plus M2 एंड V। नॉरी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। इसके लिए आई शैल यूज कैलकुलेटर। 575 into 15, 575 into 15, it comes out to be 8625, 8625 plus 1575, 1575 into 5, it comes out to be 7875. 7875 is equal to M1 plus M2. 575 plus 1575, 1575. It comes out to be 2150. 2150 V. Now V is, इनको पहले ऐड कर लें। 8625 प्लस 7875 डिवाइडेड बाई 2150। Now I do it जी। 8625 plus 7875, this is equal to so much, and divided by 2150. The answer here is 7.67. 7.6. This is the common velocity. Let's check the answer. Yes, 7.67 meter per second. Secondly, loss of kinetic energy if the collision is inelastic. And initial kinetic energy. Kinetic energy initial 1/2 M1 V1 square plus 1/2 M2 V2 square, 1/2 M1 571 V1 square 15 का स्क्वायर प्लस 1/2 M2 1575 एंड V2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। Again, I shall use the calculator. 15 का स्क्वायर 225 multiplied by 575. And divided by 2. It is 64687. 64687 plus 1575 multiplied by 5 का स्क्वायर 25 divided by 2. 19687. 19687. इसको कैलकुलेटर से करें तो ये बनते ही 64687 प्लस
19687. 19687. It is 84347. 84347 joules. Now the final kinetic energy, Kf 1/2 mv square. 1/2. Their combined mass is m1 plus m2. ये निकालना पड़ेगा. 575 plus 1575 2150 into final velocity का स्क्वायर 7.67 का स्क्वायर. इसको कैलकुलेट करेंगे. ये बनता है जी 2150 divided by 2 is equal to this and multiplied by 7.67 again multiplied by 7.67. The answer is 63241 joule. This is less than this. Ke final is less than Ke initial. Loss of kinetic energy is initial kinetic energy minus final kinetic energy. 84347 minus 63241, and this is 21106. 21106 joule. This is the loss in kinetic energy. So let us check the answer. Two 2.1 into 10 raised to power 4 joule. इसके साथ ही ये हमारे न्यूमेरिकल्स एंड होते हैं. मुझे इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.